Hello everyone, welcome to my new video that is for database management system. In previous videos we have already covered the introduction of database management system, the models of databases management system, database models, you can say database models, and what is how many types of views and what is instance and what is schema. In today's video we will see the architecture and the languages of database. So a database management system store data in such a way that it become easier to retrieve, manipulate and produce information. So this is the main motto of database management system or DBMS. So traditionally data was organized in file format. So DBMS was a new concept then and all the researches were done to make it overcome the deficiencies in traditional database मैनेजमेंट सिस्टम. सो फाइल में हम लोग डेटाबेस में फाइल स्टोर करते थे, फाइल बना मैनुअली जब हम लोग ट्रेडिशनली जब हम लोग यूज करते थे तो फाइल मेंटेनेंस होता था और डेटाबेस क्या हुआ उसी फाइल कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस कर दिया और उसका नाम रख दिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है. डेटा को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट मीन्स अपडेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं और इंफॉर्मेशन देते भी. इट ऑल्सो प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन. Now we will see some characteristics of modern database. So modern database में आप देखिएगा आप हर एक फील्ड में आजकल database management system यूज हो रहा है. Either field of airlines, railway reservation, library, school, colleges, banking, everywhere the database management system are working. So it is a real world entities. So modern DBMS is more realistic and uses real world entity design its architecture. It uses the behavior and attributes too. For example, a school database may use student as an entity and their as age and attributes. हम लोग ER diagram already पढ़ चुके हैं और we will see. Later we will also see what is ER diagram. उसमें स्टूडेंट जो है एक एंटिटी होता है और उसका नेम, एज और उसका रोल नंबर, सेक्शंस, दीज आर द एट्रीब्यूट्स. तो ये रियल वर्ल्ड से आपका रिलेटेड होता है. नेक्स्ट इज रिलेशनल based tables. So DBMS allows entities and relations among them to form a table. So DBMS से database table बनता है जो कि entity और relationship based होता है. So a user can understand the architecture of database just by looking at the table's name. Next one is isolation of data and application. A database system is entirely different than its data. A database is an active entity whereas the data is said to be passive, on which the database works and organizes. So DBMS also store metadata, that is all about. Metadata means all about of data, which is the about data to easy their own process. So data के बारे में सारा information store रहता है, इसलिए database application में easy होता है. Next, redundancy. Redundancy means duplication को हटाया जाता है. So DBMS follows the rules of normalization which split a relations when any of its attributes is having redundancy in values. So normalization is mathematically rich and scientific process that reduce the data redundancy. Next one is consistency. Consistency is the state where every relation in a database remains consistent. So database में जो भी database relation होता consistent रहता. There exist method and techniques which can be attempt to the living database in inconsistent state. So a DBMS can provide greater consistency as compared to the earlier form of data storing application like file processing system. Next, what is ACID property? जो DBMS होता है वो follow करता है ACID property. ACID property में A stands for atomicity,
C stand for consistency, I stand for isolation, and D stand for durability. So automatic transactions. First is automacy. Automatic means ये automatic transaction होता है. So it is an automatic transaction is a series of database operations such that either all occurs or nothing occurs. For example, airline ticket booking. So this is the automatic transaction. सब आपके पास either all होगा, सभी होगा, और या तो कुछ भी नहीं होगा. Example है airline ticket. Next is consistency. The guarantee of database constant rate that are not violated, particularly once transaction commits. Third one is isolation. Isolation determines how transaction integrity is visible to the other user and the system. Integrity कैसे visible है other users के लिए और system के लिए, उसमें ये concepts आता है serializable, repeatable reads, read committed, read uncommitted. And last one is durability. So guarantee that transaction that we have committed all survive permanently. For example, if a flight booking reports that a seat has successfully had been booked, then the seat will remain booked even if the system is crashes. Durability can be achieved by flushing the transactions log records, non-volatile storage before acknowledging the commitment. So this is the property, ACID property. Next is multi-user and concurrent access. Multi-user means जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, एयरलाइन रिजर्वेशन है, तो उसे multi-user use करते हैं. So DBMS support multi-user environments and allows them to access multiple data in parallel. Through there are restriction on transaction when user attempt to handle the same data items, but users are always unaware of them. मतलब कि डेटा जो है मल्टीपल यूजर यूज कर रहा है और एट द सेम टाइम जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, एक से ज्यादा यूजर उसको एक्सेस कर रहा है. सो आप भी एक्सेस कर रहे हैं, दूसरा भी एक्सेस कर रहा है, तो आप एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं कि कौन कौन एक्सेस कर रहे हैं. Multiple views. DBMS allows multiple views for the different users. A user who is in sales department will have the different views of database than a person working in the production department. So a user who is in sales department will have the different view of database than a, मतलब जितने अलग अलग department है same चीज का वो different views है. So this features enables the user to have a concentrate view of the database according to their requirement. Next one is security. Features like multiple view offer security to some extent where users are unable to access data to other users and department. DBMS offers method to impose concentrate while entering data into the database and retrieving the same at the later stage. For example, a user in sales department cannot see the data that belongs to the purchase department. Additionally, it can also manage how much data of sales department should be displayed. तो मतलब ये secrecy maintain रहता है कि एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरा डिपार्टमेंट नहीं एक्सेस कर सके, नहीं देख सके. ठीक है, और जो जनरल है वो सबके लिए विजिबल होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. सो DBMS जो है वो 3 आर्किटेक्चर पर बेस होता है, 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो फर्स्ट है टायर 1. In 1 tier architecture, the DBMS is the only entity where the user directly sits on the DBMS and uses it. Any changes done here will directly done by the DBMS itself. It does not provide handy tools for the end user. Database designers and programmers normally prefer to use single tier architecture. So in this line, the architecture of tier 1 is clear. That is, DBMS is only entity where the user directly sit on the DBMS and uses it. मतलब direct interaction user का DBMS software के साथ हो रहा है. That is the tier 1 architecture. Next one is tier 2. If the architecture of DBMS to tier 2,
then it must have an application through which the DBMS can be accessed. तो वहां पर एक एप्लीकेशन होगा जिसके थ्रू आप DBMS को एक्सेस कर सकेंगे. So programmer use two-tier architecture where they access the DBMS by the means of applications. Here the application tier is entirely independent of the database in terms of operations, design and programming. So जो टायर 2 में है वो एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो सॉफ्टवेयर जैसे कोई प्रोग्राम बना हुआ है, जैसे आपका सपोज एयरलाइन रिजर्वेशन है, उसको एक एप्लीकेशन है जिसको थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ टायर 2 आर्किटेक्चर. थर्ड वन इज 3-tier architecture. So in 3-tier architecture there are 3 levels. एक है database, that is data, application जो है middle में है, और user जो है वो presentation है. ठीक है, ये 3 लेयर है. So 3-tier architecture में first है data, database tier और data tier. At this tier the database resides along with the query processing language. We also have the relation that define the data and their constraints at this level. So database tier में query processing language जिसके थ्रू आप query करते हैं and you are getting the information, that is the database tier. And second one is, that is middle one, that is application tier. At this tier resides the application server and the programs that access the database. For a user, this application tier represents an abstract view of the database. End users are unaware of any existence of the database beyond the application. At the other end, the database tier is not aware of any other user beyond the application tier. Hence, the application layer sits in the middle and acts as a mediator between the end user and database. So, सबसे ऊपर वाले लेयर में आपका है प्रेजेंटेशन जिसमें क्वेरी है, और सबसे एंड में आपका है आपका प्रेजेंटेशन लेयर जिसमें एंड यूजर है, और बीच का जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है जो कि डेटा और यूजर के बीच में एक लिंक का काम करता है, और इस दोनों के बीच में होता है एप्लीकेशन लेयर. सो एप्लीकेशन लेयर इज इन द मिडल एंड एक्ट्स लाइक अ mediator between the end user and the database. And the last one is user. End user operates on this tier and they know nothing about the existence of database beyond this layer. मतलब अब आपका इंटरेक्शन तो डेटाबेस, यूजर का इंटरेक्शन तो एप्लीकेशन लेयर के साथ है, लेकिन डेटाबेस में क्या है ये इसको नहीं पता है. So at this layer, multiple view of the database can be provided by the application. So application layer जो provide करेगा वही user को visible है. So all views are generated by application at this reside in the application tier. So this is the 3-tier architecture. इसमें आप लोग देख लीजिए, application layer बीच में है, user एकदम लास्ट में है और डेटाबेस सबसे ऊपर है. तो यूजर को अगर सपोज आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एप्लीकेशन लेयर से रिक्वेस्ट करेंगे. एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस को चेक करके आपको फिर रिटर्न करेगा और वो आपको एंड यूजर से मिलेगा. सो एप्लीकेशन लेयर जो है मिडल मैन का काम करता है बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस. So we have already covered the data models, that is entity relationship model. इसमें entity होता है और entity के बीच में logically relationship होता है, one to one, one to many, many to many. Then relational models जिसमें आपका tables बना होता है, tables के थ्रू आपका relationship होता है, and database schema जिसमें आपका यूजर का ये यूजर है आपका, और फिजिकल और लॉजिकल व्यूज होता है और व्यूज होता है. सो डेटाबेस स्कीमा इज skeleton structure that represent the logical view of the entire database. Schema means the overall structure of the database. It defines how the data is organized and how the relationship among them is associated. So ये define करता है कि किस तरह से database में आपका फिजिकल और लॉजिकल
है। देखिए दो टाइप का है, ये फिजिकल डेटाबेस स्कीमा एंड लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। फिजिकल स्कीमा pertain the actual storage of the data in the form of storage like file index. It defines how the data will be stored in the secondary storage. And logical data defines the logical constraint that needs to be applied on the data store. It defines the tables, views and integrity. So that's all from today video. Thank you. Bye bye.